Namaste. I'm so glad that you could make it after a stormy, rainy day that lost us some action yesterday. But it looks bright and sunny today, and welcome back to the Jaipur Literature Festival. Today, we have two important ladies with us in this discussion who have not only been an iconic contributor to the world of translations, but have also truly represented the essence of being the ambassadors of words without borders. I'm going to first go to Kalpana ji because she started this online literary journal called The Words Without Borders that is an first of its kind, I think, first of its successful kind experiment as far as the review, as far as getting the word out on translations, on languages, on exchanges between languages is concerned. Kalpana ji, how did this journey with Words Without Borders started? Thank you, Aditi. I want to start by just saying how lucky I feel that I get to share the stage with Mridula ji, not once, but twice in this festival. And I have a feeling that this is going to be the start of a beautiful friendship. So back to Words Without Borders, just one correction, Aditi. I didn't start it. I wish I had, but I didn't start it. The journal it's an online journal, and obviously takes its name from Doctors Without Borders, so it's Words Without Borders. And it was started in 2003 in New York by two women who came out of the publishing industry. And the impetus was when America attacked Iraq. And the stories that were swirling around at that time about the Middle East and the Iraqis. And these two women rightly felt that there were other stories of the Middle East that needed to be told to the American public to set the record straight. So with a lot of difficulty, doing anything not for profit in America is very hard. So with a lot of difficulty, they raised some funds and they started this journal to really bridge America with the rest of the world. That was their mission. It was going to be in English. It were English translations from world literature, from world writers, mostly contemporary, modern writers, not ancient texts. And the idea was to explain the rest of the world to America. I'm really happy to say that last October, we celebrated our 20th anniversary. So the journal has been around for 20 years. It has published, I think, in something like 160 languages and dialects, from 160 languages and dialects. It has even published Kashmiri five years ago, poetry. But I think more importantly, it still presents a voice to people who don't have a voice in the English-speaking world. And it, as I was explaining to Aditi earlier, it's pretty much every major writer who is now translated into English and published in America, I would say 80% of them got their start with a piece in Words Without Borders, of which we're really, really proud. And I think about the last dozen or so Nobel laureates, 5 of them got their start in Words Without Borders. That is some feat. Congratulations. Thank you. From somebody who's translated across, who's represented or given home to over 160 languages and dialects, we go to a person who happened to celebrate 50 years of her iconic book, Chit Cobra, that was translated by none other than herself. We're going to come to you, Mridula ji, with your experience of the book and your journey with its translation. And of course, after that, the pot boiler of voices, dialects, geographical locations, cultures of your latest memoir, in your latest memoir, Ve Nayaab Aurtein. Well, this Chit Cobra of mine, can you hear me? Can you hear me? This Chit Cobra of mine is like a ghost. It haunts me all the time. For 50 years, it has haunted me. And recently it has been republished.
Now, why did I translate it? I wrote the book in 26 days flat and never changed a word. And then after years and years and years, somehow my mind was in the same kind of state of ecstasy. So I translated it. Now, if my mind was not in that state, I would not have translated it. What I want to say is that translation is also creation. It is like writing. The only thing is that you have to make your ego subservient to the ego of the writer. So you have to do two parkaya pravesh. You have to enter the spirit of the characters in the book, and you have to enter the spirit of the original writer. It's a difficult thing to do. So I believe I have a great respect for translators, and I think Kalpana is doing a better job than I am by translating rather than just writing straight. But it must have been some experience for you to, as you said, you have to enter a different spirit zone altogether when you are translating. To look at your own work, I think that's my last question on this panel about Chit Cobra with you, ma'am, with your instructions. And I am very curious. How do you look at translating your own work, because you are entering a different fabric of aesthetics altogether? That's what I said, you have to be in a particular state of mind. But by a quirk of history, we Indians, or literate Indians, are doomed to be bilingual. So we know both English and Hindi. Sometimes we know more of Hindi or more of English, but we do know both the languages. And that is one thing I'd request all you young people, don't forget, don't give up the legacy. It is very fortunate that you know two languages. Never, never give up on any one of those languages. The fact that I could translate my own book from Hindi to English, I consider, I thank our colonial masters for it. Though don't thank them for anything else. And at some point, with your permission, Aditi, I would like to read a bit from my book. Yes, please, ma'am. We'd love to hear something. Okay. Now, friends, my book is about Nayaab Aurtein. Tell me one thing. Did any of you read an essay of mine called Mere Sang Ki Aurtein when you were in school? You did. Well, that is the seed for this Nayaab Aurtein. But the most interesting character, they're all the women in it are khiski, khapti hui, out of the box, extraordinary, inimitable, weird, strange. Nobody is perfectly normal according to the normal perceptions. My mother is one of the most delightfully weird figures. So I'll read something about my mother. You do understand Hindi, I hope. हम अपनी नाजुक माँ को मम्मी कहते थे, क्योंकि 16 साल की उम्र में वे माँ लफ्ज़ सुन बेहद पशेमा हो जाती थीं। मम्मी 6 बच्चों की जचगी बर्दाश्त न कर पाईं, बीमार रहने लगीं, ज़्यादा वक्त बिस्तर पर गुजारने लगीं, पर किताबों के खप्त में फ़र्क न आया। बिस्तर पर लेटे रहने से गुरेज न कर नामी गिरामी लेखक और संगीतकार हमारे घर आते और श्रोताओं को रचनाएं सुनाते। जैनीन जी मम्मी के ख़ास मुरीद थे। जैनीन जी कुछ कहते और फिर बड़ी मासूमियत से हाथ फैला कर कहते, बात बिल्कुल सीधी है। सब लोग एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराते, क्योंकि बात जो भी हो सीधी ना होती। सिर्फ मम्मी बड़े इत्मीनान से मुस्कुराती और पता नहीं चलता कि वो इस बात पर मुस्कुरा रही हैं कि बात सचमुच सीधी थी या इस बात पर कि जैनीन जी किस कदर मासूम थे। जितनी वे अदब की फ़ैन थीं, उतनी ही गज़ल गायकी की।
तो जब तब महफ़िल हमारे यहाँ सज जाती। उनकी महफ़िलों में औरतें ज़्यादा रहती थीं और बहुत सी गायिकाएँ आती थीं। कभी कभी अकेले में आकर भी उन्हें सुना जाती थी अपनी कोई नई रचना, कोई नई बंदिश, क्योंकि मम्मी खुद गाती न थीं पर उनकी पसंद वज़न रखती थी। ये खुशगुलू नीरें मराठी, पंजाबी, पहाड़ी, बंगाली, कश्मीरी कई ज़ुबानों की जानकार जगह जगह से आई रहती। महफ़िल से एक वाक़या याद आ गया जो आपको सुनाती हूँ। उस ज़माने में शादियों में बाईजी के मुजरे का चलन था, पर सिर्फ मर्दों की बैठक में। एक बार मम्मी अड़ गईं कि औरतें इतनी पायदार मौसीकी से क्यों महरूम रहें, वे भी बाईजी को सुनेंगी। तो बड़े अदब कायदे से बाईजी को जनान खाने में तशरीफ़ लाने की दावत दी गई। नाजो नखरे के साथ आएँ और मीरा बाई की के 2 आला भजन क्लासिक अंदाज में गा दिए। बड़ी चाची ने तुनक कर कहा, कोई फड़कती हुई चीज़ सुनाइए ना। बाई जी ने कानों को हाथ लगाकर कहा, ये तो रूहानी मसरत की चीज़ है, इससे बेहतर सुनाने की हमारी ताब नहीं। वे बोली, अरे वही गज़ल गाइए ना जो मर्दों की महफ़िल में सुनाती हैं, चिलमन के पीछे से हम भी तो सुना करती हैं। सख्त पर शीरीं आवाज़ में बाई जी ने कहा, आप ख़ानदानी बीवियां हैं, जो चाहे करें, पर हमारी भी कोई इज़्ज़त है, औरतों के बीच हम वो नहीं गाया करती। आप समझे ना, जो मर्दों के बीच गाती हैं वो औरतों के बीच गाने से उनकी बेइज्जती होती है। तब मम्मी ने कहा, सुभान अल्लाह, आपकी मौसीकी और मोजिज़ बयानी दोनों की जितनी तारीफ़ की जाए कम है। वाह। चाची से कहा, ये अजीम फ़नकार हैं, ख़ुद मुख्तार, आपकी मर्ज़ी की ताबेदार नहीं। बिस्तर से कम उठने वाली मम्मी बाई जी के पास गईं और झुककर उनके दोनों हाथ अपने हाथों में सहेज लिए। बाई जी भी कम न थीं, सीधी खड़ी हुईं और उनका हाथ चूम लिया। मम्मी ने उन्हें गले लगा लिया। चाची तो खैर दिनों दिन उनसे नाराज़ रहीं और मम्मी ने फिर कभी किसी बाई जी को जनान खाने में आने की दावत नहीं दी। एक बात और मम्मी के बारे में बता देना चाहती हूँ, छोटी सी, 2 मिनट लगेंगे। जैसे जैसे हम बड़े हुए, मम्मी हमारी दोस्त और राजदार बनती गईं। किताबें पढ़ने लगे तो किताबों पर बातें होने लगीं। कॉलेज की दोस्तों की बातें होती तो मम्मी को उसमें रोमांस की बू आने लगती। धुआं बिना आग होता तो नाउम्मीद होती। मैंने हमेशा उन्हें नाउम्मीद किया। मेरे कारनामों में रोमांस की बू आई ही नहीं। नाटक वगैरह का रिहर्सल करके देर रात लड़कों के साथ घर लौटती, तब भी नहीं। उनका इंट्यूशन बेहद मार्के का था। उस मामले में मंजुल, मेरी बहन, ने उनकी भरपूर दिलजोई की। मज़े की बात ये थी कि मेरी दोस्तियाँ सब खुली किताब थी और मंजुल का इकलौता इश्क बहुत मेहनत से पोशीदा रखा राज। पर मम्मी को अंदाज़ हो गया था। इसका पता तब चला जब मेरे नाम से आ रहे बेशुमार ख़तों के बहाव में एक दिन एक मुख्तसर ख़त आया। ये सारे ख़त मंजुल को आते थे मगर मेरे नाम से आते थे। तो ये बड़ा मुख्तसर सा एक पन्ने का ख़त आया। मैंने मंजुल को पकड़ा दिया और उसने वो एक सफ़े का ख़त मम्मी के सामने खोल लिया। ख़त का पिछला हिस्सा देख मम्मी ने पशेमा आवाज़ में पूछा, वो तुझे इतने छोटे ख़त लिखने लगा? सवाल मुझसे नहीं, मंजुल से पूछा गया था, जबकि सब ख़त मेरे नाम से आते थे। मज़मून तो उन्हें पता नहीं था, पर लिफाफा देख मज़मून समझ जाने में माहिर मम्मी का इंट्यूशन लिफाफे को झूठा साबित करना जानता था। This is one of those rare manuscripts that you receive in your inbox, and your days and nights are boiled into that manuscript for, I don't know, it took us 2 months. And when she gave this manuscript to us, and we knew that here is a world that's going to open up. The Purani Delhi,
And of course, you have, we are in paucity of time, otherwise her expedition to Iran and Prague were also beautiful here. Coming to Kalpana ji, your book, For Now It Is Night, it's a beautiful collection of writings from Kashmir, in which you've also translated as you've also contributed as a translator. I'd like to know more about the book, its journey, and of course, hear some of your excerpts from the translation. Thank you. With pleasure. This book is by a modern, not contemporary, he passed away in 2009, but a modern fiction writer from Kashmir, also a major dramatist, Hari Krishna Kaul. And in full disclosure, he's my uncle. He was my uncle. He was my mama, my mother's brother. And it was, I'm sure some of you know, and you see the headlines from Kashmir, so you know that in 1989, 1990, there was an exodus of Hindus from the valley because the circumstances were difficult there for everyday life. And with that exodus, Hari Krishna Kaul pretty much lost his audience because he wrote in Kashmiri for Kashmiris. And he found himself in Delhi without an audience, and that was quite a traumatic experience. But this is one of the things I think I want to convey, especially to the young people sitting in front here, that he never allowed himself to get bitter about this. Other writers did. They went into tantrums, they claimed to be victims, but he never allowed himself to get bitter. And he continued to write initially about stories from Kashmir, from this 1 square mile area of downtown Srinagar, which provides the milieu for his stories. I kind of liken him to as Orhan Pamuk is to Istanbul, Hari Krishna Kaul is to downtown Srinagar. That's where his character... Beautiful. That's a beautiful allegory. That's where he's like a miniature painter of that region. That he notes all its trivial everyday life, but because this is Kashmir, the ordinary becomes extraordinary for all the political reasons and the religious divides. But he never allowed himself to get bitter. He never presented Kashmiri Pandits as victims. He never demonized the other. He always tried to find common ground. But so if you will let me, Aditi, I'd like to read 2 excerpts. One from one of his first published stories that got him acclaim called Sunshine. And then I'll read the last story, and you'll see the narrative arc that goes from one story to the other. Sunshine was published in Kashmir in '72 to huge acclaim. It made him a celebrity overnight. And one of the reasons I'm reading from this is because it foreshadows a lot of his concerns. First of all, it's his major female protagonist in this story. And again, with a nod to Mridula ji, I had to include this because she's a very feisty woman, the protagonist in this story. And he is able to mirror her inner life with such sensibility and such sensitivity through a variety of modes, including stream of consciousness. But it also foreshadows for Kashmiris, even of my generation, geography is very simple. It's actually very, very simple. It's Kashmir and everything else. The rest of the world is outside of Kashmir, and Kashmir is here, and everything else is there. And the stories trace journeys from here to there and back, because that's what all Kashmiris want. Whether you're Hindu or Muslim, you want to go back to Kashmir. And unfortunately, in Kaul's case, he was not able to go back. And the later stories are stories of exile, from which I'll also read a little excerpt. So this is the opening of Sunshine. Now that she had arrived in Delhi, Poshkuch felt like she was in a completely different world. She heaved a sigh of relief. Everything else be damned, at least there are no Muslims here. All around me are my own Hindu people. The vegetable man, the baker, the milkman are all Hindus. And what a huge relief it was to be away from that fishwife, her older daughter-in-law. Just the thought of her sent a shiver down Poshkuj's spine.
She recalled how often her daughter-in-law would torment her. There was a time when people did not even know Poshkuj's name, and now the shrew had dragged it through the mud. But God has not spared that woman entirely. Poshkuj thought to herself, Gasha and Serba are born from the same womb. Look how well Serba is doing here in Delhi, but Gasha can barely feed his family there in Srinagar. And it is all because of the bad luck that that shrew brought with her. Poshkuj had already decided that she would not go back to Kashmir, not even in the summer. It was around 10 o'clock in the morning, and she went out to the backyard to soak in the sun. Now, Poshkuj becomes uncomfortable in her new surroundings. She realizes she doesn't fit in. And the story is about going from this level of comfort to saying, I never want to go back, to her dislocations and her inability to communicate with her son and this new environment. And the second section, I'll read a very brief second section from this story. And this is her first visit to Chandni Chowk. What a lot of things were being sold in Chandni Chowk. So many clothes that would have been good for Bitter, that's her grandson. I would have bought something for him if I had money of my own. But I'm sure I'll go back to Chandni Chowk soon. Then I'll buy a shirt and shorts and a hockey stick for Bitter. I'll probably have to buy bangles for the neighbor's daughter too. And of course, some ordinary sari for that wretch of a daughter-in-law. And what do you know? There are Muslims in this city, after all. Those burqa-clad women were strolling about so casually in Chandni Chowk. I wonder if they fear living in Delhi just as we fear living in Kashmir. But we haven't been killed there. So why should they be attacked here? Still, how do you smother the fear in your heart? Separated by continents, separated by decades, but joined together by Chandni Chowk. That's the magic of geographies. Kalpana ji, as I understand from your over of work, the minority voices, the voices that do not make it to the loud front lines, are the focus areas for you. What are your journeys been like? And I talk about journeys because I'm requesting you for anecdotal stories, snippets from your entire effort of supporting translations, voices from across the globe, especially South Asia. This book is actually my first work of translation. And it's a collaborative translation, and it's a story I like to tell. Because I feel that between the headlines and Kashmir Files on one hand, and Bollywood's interpretation of Kashmir, the real Kashmir exists between these two extremes. And the real Kashmir is like everywhere else. People live, they love, they laugh, and they want their stories told. And when I decided to start this project, it was obvious to me because my uncle wrote in Nastaliq, which is like the Arabic Persian script. So very few, actually very few Kashmiri Hindus, young people can read that script any longer, and certainly not since 1989. So when I started this project, it became clear to me that I would have to look for my co-translators within Kashmir. And for obvious reasons, they happened to be young Muslims. And I really wanted to work with young people because I thought that the translations needed a fresh contemporary look. Some of the stories had been translated before, but they were in a kind of an archaic English from my uncle's peers and contemporaries. And so I wanted to find younger people.
And when I started looking, three people came to my attention, and they are they're academics, they are cultural historians, they are writers, and they all brought a different perspective to this. Thus, there was a woman and two men, so it's, I call it the DEI, the diversity, equity, inclusion of translation. So that every religion, every age is represented. But what happened during this process was also a communication. For one of these translators, I was the only Kashmiri Pandit they had encountered in any great depth. And so I think there was a communication both sides. I learned from them, they learned from me, and that's the beauty of translation. And that's why I like to work with, I hate the word marginalized because it has so many connotations. I like to work outside of the mainstream to find voices, to find stories of people who were not heard before. And obviously right now it's Kashmir, but there's the whole Northeast. Even within the mainland India, there are dialects and other languages. I just learned about a new language today, Tulu, which I'm going to find out about. So I think this is where I draw my inspiration from. But it's really to bridge cultures, to bridge ideas, to bridge ideologies. I think that's why the translators are also called the true cultural ambassadors of the globe, because they not only bring languages together but cultures together. मृदुला जी, हिंदी साहित्य के पखवाड़े में बहुत सारी भाषाओं के लिए भी छोटे छोटे गुलदस्ते हैं, गुच्छे हैं। जब आप वे नायाब औरतें लिख रही थी तो आपके पास एक पूरी दुनिया का ऐसा गुलदस्ता था सामने जिसमें आपने कई भाषाओं के लोगों के साथ काम किया, तो उसका अनुभव कैसा रहा, हम आपसे जानना चाहेंगे। मेरे साथ एक बड़ी भारी समस्या है। मैं जब किसी को देखती हूँ या उससे बात करती हूँ तो किसी भी भाषा में बोले, मैं हिंदी में सुनती हूँ। तो इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। अब उसमें मेरी इस किताब में इटली से लोग हैं, रूस से लोग हैं, स्विट्ज़रलैंड से लोग हैं, ईरान से हैं, जर्मनी से हैं, सब जगह से हैं। मैं जब उनसे ये मेरी खुशकिस्मती सी थी कि वो हिंदी जानते थे, मगर वो अगर नहीं भी जानते थे तो जब वो फ्रेंच में बोलते थे तभी मैं हिंदी में ही सुनती थी। मैं उसको ट्रांसलेट करती चलती हूँ। कल्पना को समझ में आएगा कि आप बोलें कुछ भी, आप उसको साथ साथ ट्रांसलेट करते चलते हैं। और ये एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है कि यू आर एबल टू ट्रांसलेट immediately, and that is why probably I find that हिंदी जो है वो एक भाषा तो है नहीं, उसमें अनेक भाषाएं हैं, अनेक बोलियां हैं, और उन सब बोलियों को आप समझें तो आप खुद ही एक लिंग्विस्ट बन जाएंगे। तमाम बोलियों को, आप पूर्वी बोली को समझें, आप मुजफ्फरपुर की बोली, मुजफ्फरनगर की बोली को समझें तो मेरठ की बोली को समझें, तो नकुड़ की बोली को समझें, तो बरेली की बोली को समझें। सब बोलियां अलग हैं और उन सबको आप समझें तो आप लिंग्विस्ट ही बन जाएंगे एक तरह से। मगर हमारे पास एक सुविधा ये है कि हम उसको मन ही मन हिंदी में तर्जुमा करते रहते हैं। जैसे आपने सुना होगा, जो मैंने अभी पढ़ा था उसमें उर्दू के बेशुमार अल्फाज थे, मगर जब मैं पढ़ रही थी तो मैं उर्दू नहीं पढ़ रही थी, मैं हिंदी पढ़ रही थी। और ये बात मैं बार बार मैंने जावेद अख्तर से कही है कि ऐसा कोई हिंदी का लेखक नहीं है अज्ञेय के सिवा जिसने उर्दू ना इस्तेमाल की हो। जब तक आप उर्दू इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप जो लिख रहे होंगे वो नकली होगा, वो हम बोलते नहीं हैं, वो हम सोचते भी नहीं हैं। और ख़ासकर हम जो दिल्ली में रहते हैं, हमने तो ताउम्र उर्दू, हमें पता ही नहीं था कि उर्दू के लफ्ज़ हैं, हम उन्हें हिंदी के ही समझते थे। बहुत बाद में हमें पता लगा कि भाई ये तो उर्दू का लफ्ज़ है। ऐसे ही उर्दू वालों को पता नहीं था कि भाई ये हिंदी के लफ्ज़ हैं। जैसे श्याम, कृष्ण के जितने सिनोनिम्स हैं, पर्याय हैं, वो उर्दू में ज़्यादा हैं हिंदी के बनिस्बत। वो उर्दू में आते हैं, उर्दू की गज़लों में आते हैं बार बार, क्योंकि कृष्ण एक ऐसे मनोहारी
पात्र थे कि उसमें अरे क्या हिंदी क्या उर्दू, वो तो प्रेमी थे और प्रेमी से तो सब प्रेम करते हैं। मोहब्बत तो ऐसी चीज़ है कि किसी से हो जाए और गधे से भी हो सकती है भाई। तो आप मोहब्बत करते हैं, तो जब मोहब्बत करते हैं तो उसको सुनना ही पड़ता है। ऐसा बहुत कम होता है कि बिना बोले पूरी मोहब्बत हो जाए, पूरी उम्र बीत जाए मोहब्बत में। बाद में कम बोलने लगते हैं पति पत्नी, मगर शुरू में तो बोलते ही हैं, मोहब्बत का इजहार तो करते ही हैं। तो ये मैं ये कहती हूँ कि सिर्फ मोहब्बत कीजिए एक दूसरे से तो बहुत कुछ हल हो जाएगा, ज़िंदगी खुद ब खुद हल हो जाएगी। मुझे नहीं मालूम मैंने तुम्हारा जवाब दिया है कि अपनी बकबक की है, मगर मेरी बात आप समझे सुन होंगे। रहे हैं मृदुला जी, हम सिर्फ आनंद से सुन रहे हैं। आप जो कह रही हैं वो मज़े से सुन रहे हैं। मैं बाद में मौका मिलेगा कि एक छोटा सा इसमें से सुनाऊंगी हिस्सा। मौका अभी जो ही है, आजकल जो मौका भी लड़की है, दस्तूर भी है, पर डालिए। चलो, ये मैं बतला रही हूँ कि आजकल जो लड़कियाँ हैं जो अपने को मॉडर्न कहती हैं, वो इसमें से कुछ सीखें, मॉडर्न होना सीखें। थोड़ा माइक पास करें। हाँ, तो ये शुरू यहाँ से होता है कि 1962 में चीनी युद्ध से पहले जब पंचशील चरम पर था तो पंडित नेहरू अमेरिका गए और वहाँ उन्होंने भारतीयों के सामने तकरीर की और उनसे कहा कि वो हिंदुस्तान आए और यहाँ पर उनको हर तरह की नौकरी मिलेगी और शोध की सुविधाएं भी मिलेंगी। तो और कोई तो नहीं आया, मगर एक आदिश्वर प्रसाद जैन सज्जन थे जो न्यूक्लियर फिज़िक्स की सब अपनी वहाँ पर जो भी शोध करने की उनको सहूलियतें थीं वो छोड़ छाड़ के हिंदुस्तान आ गए। और वो एक समारोह में हमारे पिताजी के साथ हमारी छोटी बहन चित्रा भी गई हुई थी, वो उनसे टकरा गई। अब जो आदिश थे वो बड़े स्कॉलर आदमी थे, साइंटिस्ट वैज्ञानिक थे, वो भी न्यूक्लियर फिजिसिस्ट थे, मगर वो देखने में गॉन विद द विंड के जो एक एशले विल्क्स होते थे, आपने गॉन विद द विंड पढ़ी है? गॉन विद द विंड पढ़ी है क्या आप लोगों ने? तो उसमें एक एशले विल्क्स थे ना, तो वो बड़े खोए खोए से रहते थे, तो वैसे ही इंटेंस चेहरा और खोए खोए से ये आदिश थे। चित्रा तो उनको देखते ही फिदा हो गई। ऊपर से एक ये कशिश थी कि एक तकरीर सुनकर ये आदमी सब कुछ छोड़ छाड़ कर हिंदुस्तान आ गया है। और वो काफ़ी मतलब आदर्शवादी लड़की थी चित्रा। तो उसने पिताजी से साफ कह दिया कि मैं आदिश जैन से शादी करना चाहती हूँ। और पिताजी भौचक, उनने कहा तुम्हारी उनसे बात हुई है? नहीं, मैंने कहा मैं चाहती हूँ, उनका पता नहीं। अरे ऐसे कैसे तुम शादी पर पहुँच गई? उनके परिवार के बारे में तुम क्या जानती हो? कुछ नहीं जानती, आप पता कर लीजिए। अब कुछ असमंजस की हालत में पिताजी ने तय किया कि उनके घर हो आया जाए। उनका घर था पुरानी दिल्ली की सब्ज़ी मंडी में, जानती हो कल्पना? पुरानी दिल्ली की सब्ज़ी मंडी में घर था। तो वहाँ वो गए, बाहर की तंग गलियों में ही दम घुटने लगा। घर पहुँच सिर चकरा गया। बेहद पुरानी 2 मंजिला हवेली, जहाँ दूसरी मंजिल पर पुराने ज़माने वाला जंगला लगा हुआ था, जिसे फलांग कर एक सिरे से दूसरे सिरे पर पहुँचा जाता था। ये तुम लोगों ने कभी नहीं देखा होगा। एक लोहे का जंगला होता था, उसके नीचे से सब कुछ दिखता रहता था, उसको आप छलांग मारकर पार करते थे और दूसरी तरफ पहुंचते थे। महाश्वेता देवी के घर में भी ऐसे ही था। और महाश्वेता देवी कहती थी कि मैं तो रोज़ काली माई का नाम लेकर इसको फलांगती हूँ, तो तुम अगर किसी भगवान को मानते हो तो इसको फलांग जाओ। उनकी बातचीत शुरू हुई पिताजी की आदिश और उनके दानिशमंद पिता से। पिताजी ने पूछा वे लोग वहाँ कब से रह रहे थे? हमेशा से, लाला जी ने छोटा सा जवाब दिया। और कब तक रहेंगे? हमेशा। जवाब और छोटा था। जैनेन्द्र का त्याग पत्र पढ़े मालूम पड़ते थे। नहीं, आदिश ने कहा, बहुत जल्दी हम नए घर में शिफ्ट हो जाएंगे। अमेरिका से आए हैं, लाला जी ने कहा और चुप हो गए।
इतने में नौकर दे मार खाने का सामान लेकर हाजिर हो गया। बहुत कुछ था, इतनी देर में बना कैसे लिया? पिताजी ने सोचा, मैं तो बिना सूचना दिए आया हूँ। लीजिए ना। आदिश और पिताजी ने एक साथ गुजारिश की और आदिश उठकर परोसने लगे। पिताजी मोहित हुए बगैर न रह सके, बोले, बहुत लाजवाब बना है। किसने बनाया? अम्मा ने। मिलवाओ तो सही, उन्हें सीधा शुक्रिया कह दूं। लाला जी ने कहा, चौके में घुसने के बाद किसी से मिलती नहीं, जैन रीति से सूतक करती हैं। आप तो जानते ही होंगे, मेरी माँ करती थी। उसके बाद जीमिए, उन्होंने एक बीच में कहा, पर इतनी सौम्यता से कि बात कटी सी ना लगी। कुछ देर बाद जी कड़ा करके, फिर इनकी शादी भी करनी है, लाला जी ने कुछ देर बाद कहा। आदिश ने फौरन कहा, हरगिज़ नहीं, मैं सोच भी नहीं सकता। पहले शोध पूरा कर लूँ तब। और ये घर, कहते कहते वो चुप हो गए। अमेरिका से आए हैं, लाला जी ने उसी निर्लिप्त भाव से दोहराया। पिताजी को यकीन हो गया शादी का उनका कोई इरादा न था। वे खुशी खुशी घर आए, खूब तफसील से सारा वाक़या बतौर मजाक सुनाया। अरे मेरा तो दिल दहल गया, जहाँ देखो जैनी, आगे जैनी, पीछे जैनी, दाएं जैनी, बाएं जैनी, जिसका नाम दरियाफ्त करो वही लाला जी। बड़ी मुश्किल से लाला जम्मू प्रसाद जैन की पुरानी पुश्तैनी हवेली पर पहुंचा। गनीमत निचली मंजिल तक महदूद रहा, वरना जंगला फलांग कर दूसरी तरफ जाना पड़ता। क्या घर था! यकीनन उसमें 2-4 भूत रहते होंगे। कबूतर थे, मम्मी ने टोका। क्या? अपनी नकुड़ की हवेली में कितने कबूतर थे? और जंगले पर तो अपनी तरह की छत डल सकती है। तुम्हारा मतलब मैं वहाँ छत डलवाने जाऊँ? नहीं, तुम क्यों जाओगे? समझा दो कैसे क्या करना है, लड़का होशियार है, समझ जाएगा। अरे उसका शादी का कोई इरादा नहीं है, पिताजी फट पड़े। आपने पूछा था? चित्रा ने घबरा कर पूछा। नहीं, उसने खुद बतलाया। उसके पिता ने कहा इसकी शादी भी करनी है, तो उसने कहा अपने शोध में बिजी है, उसको शादी नहीं करनी। घर का क्या, छोड़ो, हमें क्या, पर वो शादी करना ही नहीं चाहता। मुझे उनसे अकेले मिलना है, चित्रा ने कहा। अरे तुमने सुना नहीं, उनका घर एक अजायब घर है। और सुनो, माँ पक्की जैन शोधन है। भाभी जी की तरह माँ बीच में बोली, अरे क्या लजीज खाना बनाती थी। तुम्हारे पिताजी को तो किसी और का बनाया खाना पसंद ही नहीं आता था। मैंने तो खैर कभी बनाया नहीं, उनके घर तो उम्दा बना होगा। माँ कहती गई, मैं उनके घर खाने नहीं गया था। अरे जाओ, किसे बना रहे हो? आप मेरी बात सुनिए, मुझे उनसे अकेले मिलना है। चित्रा ने बात का रुख बदलते हुए देखकर जोर से कहा, पर क्यों? मैंने बतलाया है ना, उनका शादी का कोई इरादा नहीं है। मैं खुद पूछना चाहती हूँ। अरे क्यों अपनी बेइज्जती करवाने पर तुली हो? इसमें बेइज्जती क्या है? जितनी जल्दी उन्हें मालूम हो जाए बेहतर है। शादी तो हमारी होगी ही। क्या जहालत है, तुम्हें कैसे पता? जो मैं एक बार ठान लेती हूँ होकर रहता है। तभी मम्मी बोली, मुझे भी मिलना है। अरे तुम लोगों की समझ में नहीं आ रहा, मैं कह रहा हूँ वो शादी करना ही नहीं चाहता। पिताजी ने आवाज़ ऊंची की तो मम्मी बोली, अब मुझे हॉल तो करवाओ मत। पिताजी ने फ़ौरन आवाज़ मुलायम करके कहा, अब हम ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते ना। माँ भी वकील की बेटी थी, बोली, किसी से नहीं करना चाहता या चित्रा से नहीं करना चाहता? किसी तो ये से। एक परिवार की जो पूरी गोष्ठी चल रही है चित्रा की शादी को लेकर, यहाँ से हम ये बिल्कुल गहराई से देख सकते हैं कि किस्सा गोई सिर्फ एक भाषा तक सीमित नहीं हो सकती। किस्सा गोई में अगर लचक एक भाषा की है तो फिर कहानी का कथानक पकड़ने के लिए एक और भाषा को अपना किरदार निभाना पड़ता है। इसी सवाल को लेकर मैं कल्पना जी के पास जाती हूँ कि कल्पना जी, I would like to know, from being a translator of the fiction, how do you feel? Can I just read 4 more lines to complete the thing?
Just 4 more lines. It's just that okay, please. We will have to open the session for the discussion. After your 4 lines, I'll come to just 4 Kalpana ji lines. again. वो मम्मी ने कहा मैं भी मिलना चाहती हूँ, तो उन्होंने बोला तुम बीच में कैसे आ गई? सास हुई ना, कैसी सास जब वो शादी ही नहीं करना चाहता? मम्मी हंसकर बोली तुम करना चाहते थे? The circle of life. Kalpana ji. Translation of fiction, poetry, and the nuances of both. And how do you see yourself? Because translation of fiction, non-fiction, poetry in itself is a narrative arc, an exercise that mediates through various media. How do you see yourself as a translator experimenting with these? When I was translating this book, it became quite obvious to me that one of the hardest things to translate, this is from personal experience, must be poetry. I cannot even imagine how people go about that, because just even trying to get the titles of the stories right here, titles are very tricky, right? The titles are 1 word, 2 words, they're very rarely more than 3 or 4 words. And to capture that essence in another language, where especially from Kashmir, it's easy to go from Kashmiri to Hindi or Urdu because there are approximations. I'll give you an example. There's a story in the book about censorship, which is, the title is translated as The Tongue and the Egg, which doesn't tell you anything except the title, if I were to translate it into Hindi, would be Katha Jeeb Ki Sawal Ande Ka, which is really gets to the, it's an unnamed narrator who goes to look for his friend whose tongue is lost. And then it weaves in the stories of censorship, because the tongue is a metaphor for censorship, and the friend cannot speak, and eggs are disappearing from the market, but the closest we could come was tongue and the egg. And the other is the last story in the book, which is my favorite story. It's translated here as to rage or to endure, which again is, it was really like at the last minute, the publisher said, you have to come up with a title. And it was really, it was done with a shrug of the shoulders and said, okay, to rage or to endure. The Kashmiri word for that, Kashmiri title for that story is hurl. Hurl doesn't really even have a very close approximation in Hindi or Urdu. It's like, it's not habit, it's not adat. It's kind of that confluence of acceptance and resignation and accommodation. So you never accommodate or accept something that is good, but you learn to accept and resign yourself to something that is not so good. And so these are the problems that come up in translation. And there were pieces of poetry in these stories that I translated, or we all translated. And again, I think that's one of the hardest things to do, because ambiguity, irony, and anything concise is extremely hard to communicate in another language. Indeed. We're opening this session to bring our audience in. Questions, comments are most welcome. Yes, please. हेलो नमस्ते मैम मैम मेरा सवाल ट्रांसलेशन पे है कि ऐसा क्यों है कि we don't treat translators as original writers because they are recreating something. So when you recreate, that means you are creating something new. It doesn't mean that someone has written something about that particular thing. And so if we treat translation as the original work, then I think translators will get the, I think, more importance, like they are getting right now, I think. Yeah, so that's my question. Your thesis is a little wrong. And now, I think your thesis was right up until about 4 or 5 years ago. And I think now translators are getting their due.
But it points to an interesting problem. There is an original writer, and there's a translator. And the translator's job is to really to be more of a, unlike the translators of old that would translate pretty word to word, I think when you're translating into another language, I feel you are not so much thinking about the people who read the original language, you're thinking about the people who will read the target language. And so you're translating for that readership. And that brings in a nuance into the role of the translator. You almost become, I wouldn't go so far as to say a co-creator, but you do become an editor and a curator, because there are times when you emphasize something and there are times when you de-emphasize something. There's a particular story here that Kaul wrote a little sequence in a dialect of Kashmiri that is spoken in the upper regions. And it was impossible to translate. There was no way. So unfortunately, we just cut it out. So the readers in English will never get that flavor. But at the same time, I think if we didn't translate and bridge and curate and edit, a wider readership would not come to this author. But your original question, it is changing. Translators are now being included in prizes. When the original author is given a prize, they are given, I was looking at a book the other day that was published 5 years ago. It was a book of translated work. The translator's name was not on the cover. And that's all changing. So it's all changing for the good. तो बेहद भारी दिल के साथ हमने मृदुला जी की रीडिंग को स्थगित किया था बीच में, क्योंकि कुछ सवाल कल्पना जी के पास शेष थे. लेकिन अब मेरा आपसे अनुरोध है कि एक बार जो आपकी मम्मी की तस्वीर किताब के कवर पे है, अगर आप वो हमारे पाठकों को ज़रूर दिखा दें, ताकि वे नायाब औरतों की असली नायिका हमारे सामने. यस, सो ये है वे नायाब औरतें. This is my mother, the one talking to the baiji. So इसी के साथ oh sir, my teacher. Very rare are students who remember a teacher after some years. Thank you. Kalpana ji, I wanted to agree with you and to emphasize what you said about the role of the translator, how translators have got more recognition and visibility than before. And I think one must remember that a translator must submit to the greatness of the original writer. And without that submission, they should not bother to translate, perhaps. There is an element of humility. A very small question to Mridula ji. Mridula ji, again ने आपका क्या बिगाड़ा है? आपने कहा कि हिंदी के सभी लेखकों में उर्दू आती है, अगे को छोड़ के. बिछी पैरों में नदी जो दर्द की रेखा, कभी बासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है. और आपने बोला दानिशमंद. पूछिए सबसे कितने लोगों को दानिशमंद का अर्थ पता है? दानिशमंद का अर्थ नहीं पता क्या लोगों को? पता है ना, सबको पता है. जो दानिशमंद ना हो उसको नहीं पता. अगेन ने उर्दू लिखी थी क्या हरीश जी? थोड़े बहुत उर्दू शब्दों का आना और उर्दू का आना बिल्कुल अलग बात है. बहुत धन्यवाद. समय सीमा हम लांघ चुके हैं उस लोहे की दहलीज की तरह. आप सभी का बहुत धन्यवाद. अच्छे श्रोता हो तो बातचीत में रस आता है. शुक्रिया.